Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon, all panelists. To keep you informed, we have opened the room for attendees, so we are all audible and visible to them. And we are also live on the YouTube channel of Epilepsy Foundation. You all have rights to start or stop your video and also unmute or mute yourself. So as and when required, you can use the setting.
Good afternoon, ma'am, Dr. Vengam. Good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Hello, everybody. Good afternoon, Dr. Vengama, Dr. Mangal, Dr. Good Murali. afternoon, sir. Yeah. Good afternoon. Good afternoon, Doctor. Good afternoon, doctor. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yeah, yes, welcome. So we are into the epilepsy week, and for last couple of days we have been having every day some program which is both online as well as offline. So we have few people in the Lotus House, and many of them has joined online now. So today's especially program is for people with epilepsy, and how epilepsy management is different and important. And there are many women who are getting married and pregnancy. So we have kept a program especially with the expert, and Dr. Vengama, we all know that she is a president of Indian Epilepsy Association, run the Apprehensive Epilepsy Clinic. Dr. Vengama is a vice chancellor at Tirupati University at Tirumalai, and she has been especially working for the epilepsy for past many years, and recently she has organized a clinical course and conference on the clinical neurophysiology, and I was there. It was wonderfully well organized, and I was amazed by the college students and nursing student, physiology student who stood in a line in hundreds of them to welcome us. So thank you, Professor Vengama, to be here. Thank you, sir. Yashoda Valkandar is a person with epilepsy from childhood, and she has been working for the people with epilepsy. She works for Samvedna Foundation, and she's going to speak to us about epilepsy and marriage. She also runs the marriage bureau, so that will be very nice. Dr. Mangal Kardil is a neuropsychologist, well trained. She has been working with people with epilepsy and our epilepsy center for past
5 years, and she has trained more than 200 children with epilepsy and cognitive disturbance, and she has developed her own tool, the Brain Next, to treat these children. So she'll speak about cognitive disability. And then Mrinalini is from Tejan Group, and Yes, sir. she is Thane. She stays in Thane, and she's been running very actively. I think she is a homeopathic doctor, if I'm not wrong. I may be. This was my impression that you were also a medical doctor, and she's going to speak about ER4 therapy for epilepsy. So that's we'll have some question answer. So to begin with, may I request Professor Vengamma to kindly start our talk on epilepsy and pregnancy. Dr. Vengamma, please. Okay, shall I share the screen? Thank you, Dr. Nirmal Surya, and I'll just share the screen. Is it my screen visible? Yes, ma'am. Dr. Vengamma, you have the. I think my voice also is audible very well. Yes, madam. Okay. Good afternoon to everybody. I bring greetings from Tirumala Tirupati Devasthanams, and I bring also greetings from Sri Venkateshwara Institute of Medical Sciences and Sri Padmavati Medical College for Women. And I'm very happy, and I would like to thank Dr. Nirmal Surya from Epilepsy Foundation of India for organizing this Epilepsy Week. And I'm very happy to be the part of today's National Epilepsy Week celebration. And I'll just give you a brief overview on epilepsy and pregnancy. I think Dr. Nirmal Surya with International Bureau of Epilepsy and National Health Mission, he's for the last 2 decades, he's doing a lot of service to the patients with epilepsy. I think all of you know this epilepsy definition. Everybody might have known because these are all persons with epilepsy. It is a disorder of brain characterized by predisposition to generate seizures with neurobiological, cognitive, psychological sequences. Basically, one single episode you should call as a seizure if more than recurrent, 2 or more, and it should be unprovoked by any identified cause, then only you should label as a epilepsy. I think everybody know there are 50 million worldwide, out of which 40 million are in the developing countries. In India, almost 10 million are there. And most important problem is majority remain untreated. The problem today's topic is epilepsy and women and pregnancy. Men and women are equally affected. Nearly half of women are with epilepsy. About half of women with epilepsy are in the age group of reproductive age group, that is 15 to 49 years. Approximately 1% of population has epilepsy, making this one of the most common health condition affecting the reproductive aged women. It is estimated that over 2.5 million with epilepsy in India, with up to 52% of them being in the reproductive age group. There are special problems in management of women with epilepsy, their role in reproduction, which starts at menarche and sometimes it may continue up to menopause. While prevalence of epilepsy and approach to treatment are similar for both men and women, women with epilepsy are more likely to experience seizure patterns that are related to reproductive cycle and at risk of reproductive health dysfunction and pregnancy complications. Basically, because people with epilepsy, especially women, experience tremendous social stigma and alienation in life compared to men. Despite so much progress in medical and surgical therapy, better social acceptance and favorable legal stand, women with epilepsy are less often married when compared to others in the community. Diagnosis of epilepsy is entirely from the history and from the video recording of the mobile phone
observing the attack, we can make the diagnosis. Investigations are only supportive. Coming to the women with epilepsy, there are many aspects are there. I'm going to highlight epilepsy and pregnancy starting from fertility. It can affect effect of pregnancy on epilepsy, effect of pregnancy on anti-epileptic drugs, effect of epilepsy on the pregnancy and fetus, and effect of anti-epileptic drugs on fetus. Basic fertility rates in women with epilepsy are reduced by 1 to 2/3 when compared to women without epilepsy. Lower birth rates is because of social and psychological pressures which are experienced by these women. Majority of the time, women with epilepsy are counseled not to have children because of fear of transmission of epilepsy, concern that anti-epileptic drugs will cause birth defects, or beliefs that seizure will render them unfit parents. This misinformation about the epilepsy fuels many of the fears. That's why, in addition to that, a reduction in the sexual desire is also reported to 1/4 to 1/3 of women with epilepsy. As with infertility, the contribution of social and psychological stresses of living with epilepsy may be an important factor for these higher rates of dysfunction. This sexual dysfunction also could be because of altered neurohormones, suggest the important clues to sexual dysfunction and psychopathology. The most important causes for sexual dysfunction are social and psychological influences, disruption of normal limbic function by epileptic discharges, which are commonly seen with the complex partial seizure. For the third factor is secondary effect of anti-epileptic drugs. From our own study comparing from the Kerala epilepsy from India, Kerala registry for epilepsy and pregnancy, you can see the normal fertility rate was 15. Infertility rate was 15.15%. Among with epilepsy, it was 38.4%. And as you could see from this, people with infertility with epilepsy, they had a lot of hormonal disturbances, which has been documented. Coming to the epilepsy and pregnancy, it affects 1 in 200 women of child woman age, is the commonest neurological disorder to complicate pregnancy. Exposure to anti-epileptic drugs in 0.3 to 0.6% of pregnancies. Our aim during the epilepsy in pregnancy is to control the seizures, at the same time minimize the risk to mother and fetus. They have many concerns, the risk of more frequent seizures, changes in anti-epileptic drug levels because of altered pharmacokinetics and medication compliance, and potential for anti-epileptic drug-related teratogenicity. That's why women with epilepsy should receive counseling about these potential complications. Basically, like it could be effect of pregnancy on epilepsy on anti-epileptic drugs. Similarly, effect of epilepsy on pregnancy and fetus, and seizures occurring during pregnancy for the first time or with an eclampsia, effect of AEDs on fetus. There are factors which could influence the seizure during pregnancy. There could be increased in occurrence of seizures during pregnancy because of non-compliance, because fear of teratogenicity, they stop abruptly, because of recurrent vomitings, hyperemesis, biochemical derangement, hemodilution because of physiological changes during pregnancy, sleep deprivation, mental stress can cause increased frequency of seizure during pregnancy. But sometimes the seizures could also be better during pregnancy because of progesterone effect. As you could see, that seizures are more common during peripartum time, both generalized as well as the partial seizures. Most studies report that 20 to 50% of women have seizures during pregnancy. That already I mentioned the causes. Women with the catamenial epilepsy may have improved seizure control during pregnancy. The study from Kerala registry from Dr. Sanjeev Thomas has shown that highest of incident seizure relapse during peripartum days. And drugs like lamotrigine, oxcarbazepine, polytherapy can have a more increased frequency of seizure because of altered drug kinetics.
The drug kinetics tend to decrease, drug levels tend to decrease because of increased blood volume, decreased protein binding, decreased absorption, and decreased patient's complaints because of many other factors. 1/3 of women's seizures frequency could increase during pregnancy, and this epilepsy has got effect on pregnancy. It can cause first trimester loss with the premature rupture of membranes, increased incidence of IUGR, intrauterine growth retardation, cognitive dysfunction. Teratogenic potential is a major concern, although more than 90% babies born to mother taking AEDs are healthy, but still it's a major concern. In general, epilepsy has little effect on the course of pregnancy, but higher rates of spontaneous abortion, miscarriages, pregnancy are known compared to the normal people. The incidence of preeclampsia also could be little high. Some convulsive status epilepticus definitely carries a higher risk of ischemic damage for the fetus from its systemic effects. Overall mortality of the baby in the first week after birth is increased up to 3 times in the offsprings of women with epilepsy in some but not in all studies. The fetal loss could be in the form of spontaneous abortion, induced abortion, stillbirth, or IUD. If you take the rate pregnancy outcome compared to the Western and our Indian Kerala registry, it is almost 96% had a good live birth, and spontaneous abortion is only 2.4% compared to the Western studies. What are the perinatal morbidity, mortality, or little higher? Preeclampsia, preterm labor, bleeding, poor fetal growth, fetal death are described. Maternal mortality is 10-fold higher than in the control group. They can have first-time seizure during pregnancy as a part of gestational epilepsy, gestational onset epilepsy, eclampsia, or sometimes they can have a first-time status epilepticus. And sometimes pregnancy-related CV, cerebral venous thrombosis can also cause first-time seizures, or some of the malignant tumors of the brain like meningioma sometimes can aggravate during the pregnancy, can cause first-time seizures during epilepsy. Preeclampsia is the commonest, usually starts in the second half of the pregnancy, approximately affects the 0.05% of deliveries. The treatment of choice is magnesium sulfate, or you can give anticonvulsants. A minor deterioration of epilepsy in pregnancy affects 1/4 of patients. Basically, sometimes they can have a coincidental eclampsia. We have to exclude if there is an increase in seizures. Check anti-drug levels, anti-epileptic drugs. If there is a mild deterioration, make a minor increase in dose. If there is a severe deterioration of seizures, increase the dose of existing medication, or dose is maximal, add another drug. Usually during pregnancy, we have to check for the pre-pregnancy levels, top up to the dose of maintain the pre-pregnancy level, escalate the dose second and third if required, add on if the escalation fails. What are the investigation during pregnancy in related and AED levels and related to the fetus? If seizure-free, baseline anti-epileptic unnecessary. If there are recurrent seizure, then only you ask for the drug levels. That is 6 to 10 weeks or 15 to 16 weeks maternal serum alpha protein amniocentesis to be done. And 34 to 36, again, check for the AED levels and maternal vitamin K. And this is commonly seen with the drugs like lamotrigine, where the fluctuations in levels are more. You may have to ask for all other drugs, it may not be required. But to detect the anomalies, ultrasound scan at 12 to 14 weeks to check for any anencephaly. And if they're all like drugs like phenytoin, phenobarbital can cause cardiac and craniofacial anomalies. Sodium valproate and carbamazepine is known to cause neural tube defects. For all patients who are on polytherapy, you have to do the frequent growth scans from 12 to 14 weeks. 18 to 19 weeks, high-level ultrasound predicts a neural tube defect in more than 95% of this one. And oral clefts and heart anomalies can be seen at 20 to 24 weeks of good ultrasound.
Basically, the management is first establish the correct diagnosis of epilepsy, monitor the seizures while planning pregnancy. If there is a component of psychogenic epilepsy, you can stop the drug. AED slowly taper and stop, may not be required to continue. But if it is a definitely seizure, try to put a minimum dose, try to be monotherapy, and consider more frequently lower doses to avoid high peak concentrations. And then folic acid at least 12 weeks prior to conception is an ideal setting. Babies of mother with epilepsy are theoretically at risk of intracranial hemorrhage. Hence, it is recommended that vitamin K 20 milligrams orally daily is prescribed from 36 weeks until the delivery. Most commonly seen to be given to enzyme-inducing drugs like first-line drugs, phenytoin, phenobarbital, primidone, and carbamazepine. Women should continue their medication during labor also. 1 to 2% women experience seizure during labor and further after 24 hours after the delivery. Stress, pain, sleep deprivation, overbreathing, dehydration can increase the risk of seizure during labor. If seizure occurs, maternal airway oxygen should be maintained and they should be given IV diazepam or lorazepam as per the protocol. Epilepsy per se should not be an indication for induction of labor or a cesarean section, but if there are recurrent seizures, we should go for elective cesarean section. Postnatally, babies born should have vitamin K 0.1 milligram per kg IM at birth to reduce the risk of hemorrhagic disease of newborn. Especially babies of women on phenobarbital often experience withdrawal. They may be jittery and irritable. Any increase in drug during pregnancy will need to be slowly decreased to pre-pregnancy level within over next 3 to 4 weeks to avoid toxicity. Coming to the breastfeeding, anti-epileptic drugs cross into breast milk in inverse proportion to their extent of protein binding. Basically, like drugs like phenytoin, valproate, which are extensively protein bound, are very low concentration in breast milk. Drugs like carbamazepine, phenobarbital, lamotrigine, which are low to moderate binding, can be anticipated to have a low to moderate concentration in the breast milk. Gabapentin, levetiracetam have no protein binding. They have an equivalent concentration in maternal serum as well as the breast milk. But however, in the interest, this one encourage anti-epileptic. When encourage as anti-epileptic drugs excreted in low concentration, breast milk feeding should be encouraged. The benefit of breastfeeding are felt outweigh the potential risk of continuous exposure of neonate and infant to the anti-epileptic drugs. Coming to the major malformations, like normal population, the malformation is 2%. Epilepsy without any medication, it is 2 to 3%. Epilepsy with one drug, it is 4 to 7%. Epilepsy on 2 drugs, it is 5 to 10%. More than 3 drugs, the rate of fetal malformation may go more than 10%. Basically, like major malformations in the form of heart and CNS malformations and skeletal, minor fetal anomalies also could be there. And neural tube defects with the sodium valproate, it is 1 to 2%, carbamazepine 0.5 to 1%. Minor malformations could be in the form of, it can affect 7 to 15%. They will not disturb the day-to-day life, like hypertelorism, epicanthal fold, broad nasal bridge, distal digital nail, hypovolemia. Basically, certain monotherapies better to avoid, like valproate, clobazam, and topiramate. They have a higher risk of malformations. Polytherapy carries definitely risk, as I showed, more than 10% because of pharmacokinetics and dynamics influence the polytherapy. This is for each drug, like as mentioned, the valproate has got a highest, this one. Basically, this is to again tell you about the monotherapy with the drugs, without drugs. Highest is with the clobazam, valproate, and topiramate. These are all the drugs, like safe is lamotrigine, levetiracetam, followed by carbamazepine. Valproate is said as the most top risk for the anti-epileptic drugs.
This again, this table shows that if the dose of the individual drug is more, the incidence of malformation is very high. Like valproate with the 500, the chances of malformation rate is very low. Similarly for phenobarbital, carbamazepine also. Basically, to some major malformation rate is 6 to 7% if they're on polytherapy, one single or two drugs. More than two drugs, it is 15%. Neural tube defects are commonly seen with the sodium valproate and carbamazepine. Cardiac malformations are with phenytoin and phenobarbital. Teratogenicity again appears to be dose dependent, as I mentioned. Keep the lowest dose to offer a seizure control, because some of the time juvenile myoclonic epilepsy, which is common in women, they need only the drug of sodium valproate. It has been found that in addition to this one, delayed complications like slight increased risk of developmental delay, cognitive impairment, dysmorphic features have also been seen with sodium valproate. The mechanism is again attributed to be the free radical metabolites induce folic acid deficiency. That's why the folic acid replacement has been advocated. To say that polytherapy is a strong risk factor, valproate can lead to, in addition to malformation, decreased IQ. Autistic spectrum disorders also have been described with the valproate exposure. Phenytoin, primidone, phenobarbital known to have a cognitive score. The cumulative incidence of any form of epilepsy by 40 years is 4.5% among individuals with first relatives. Coming to the last part, management, counseling should include information about the birth control, contraceptive failure, pregnancy outcome, need for optimizing of AED dose. Importance of folic acid has to be emphasized pre-conception. Diagnosis of epilepsy and need for continuing AED therapy has to be reviewed. Valproate preferably should be avoided. Only if prescribed, it has to be in the lowest dose, minimum effective dose. Always avoid polytherapy. When taking other drugs, you always have to reduce minimum and avoid sleep deprivation. Levetiracetam is the first choice if it is the first time seizure during pregnancy. If there is a family history of neural tube defects already, then better to avoid valproate and carbamazepine. Adjust the anti-epileptic drugs, and valproate should not be given, especially for the women who are likely to pregnant. Women and girls epilepsy and their partners must be given proper counseling about contraception, conception, pregnancy, breastfeeding, menopause. Aim for seizure freedom before conception and during pregnancy, and use lowest effective dose of each AED. Avoid polytherapy if possible. Especially lamotrigine is recommended during pregnancy because of when valproate is contraindicated in women with juvenile myoclonic epilepsy, because it is associated with low teratogenic, but it may need higher dose adjustments during drug levels because of change in plasma levels. Folic acid 5 mg should be advocated all women taking AEDs during the reproductive age group. Closer monitoring of pregnancy for women with epilepsy is recommended, as they have a risk for spontaneous miscarriage, antepartum hemorrhage, postpartum, preterm birth 37 weeks before the gestation. And perform high resolution ultrasound screen 18 to 20 weeks. If AED could be reinstated after 12 weeks to get a good seizure control, because teratogenic effects at that stage was become less. Lamotrigine, oxcarbazepine, levetiracetam dosage may have to be increased as the plasma maternal concentration markedly decline. For each patient, we usually aim to achieve maximum control of seizures as generalized seizure compared to the focal seizures. And for each patient, suppose I'll give illustrate 30-year-old wife married for 5 years, JME on 1000 mg per day, last seizure 3 years back, she intend to conceive shortly. We should explain the risk of each and everything, like related to birth defects, seizure relapse, weight gain,
what requires. Suppose if she's on no drugs, no, currently not on valproate, her risk of birth defects is 3% seizure relapse because of all the stress, maybe 3 plus no weight gain and escalation. Suppose if she's on 1000 milligrams, the birth defect chance will go up to 10%, weight gain may be there. Because she's already on drugs, seizure relapse may not be there. Suppose if it make 500, the chance of birth defect will come to 6%, but she had mild weight gain, mild seizure relapse. She's on lamotrigine, if you change it is 4% of the birth defect, but more than a no AEDs, no weight gain, but dose escalation during pregnancy is required. If she's on levetiracetam, again, the risk of will be 4%, seizure relapse is 1%, dose escalation. Like this, we have to give a scenarios and explain to them, then counsel, and then based on that only, we have to, decision making has to be joint. Basically, in this sort of a thing, seek patient's participation, help your patient explore and compare the treatment options, reach a decision with your patient after discussing, evaluating this one. Basically, need for a preconception care, we have to explain to them. Balanced presentation of seizure outcome, maternal complication, fetal adverse effects, and drugs. Always shared decision making is this one. Continuous follow-up is recommended for these patients with epilepsy and pregnancy for a better outcome. Thank you. Thank you, Professor Vengamma. You have given a very, very comprehensive detail about epilepsy and pregnancy and what are the various precautions. There's only one question is about the employment and self-employment. How many percentage of epilepsy candidates were employed and self-employed? I think if you can give example at your university, Vengamma, or your setup, I can give it my setup. There definitely, it all depends upon the what is the type of epilepsy and what is the underlying cognitive. If only very infrequent seizures, we can definitely work as like in our hospital, we have about 2 or 3 staff nurses working as a patients with epilepsy working as a staff nurses, and there are 2 or 3 doctors also are there. Only we tell them avoid night duties, otherwise they can work as usual as long as they're able to work cognitively okay. We can definitely work like any other individual. Only we as a management, we tell them to avoid night duties because to have a proper sleep. Absolutely. So in our NGO, we got about 20 people working. So 5 are full-timer and about 15 are the, part-time, they come, work and go. So it all again depends. When we offer many of these epilepsy patients the job, sometimes they are not able to do it because of various other reasons like traveling. The parents are not ready to leave them alone. So many times we tell the parents that you need to train them, but some of the patients, it becomes difficult. Again, it also depends on the level of education and the family background of the patient. Many of my epilepsy patients from the rural area, where their parents have got their shop or have the business, they accompany them and they've been, and we encourage them. So this is a question which is relatively very complicated. The government jobs are not reserved for epilepsy patients, and they should avoid anything which is working near the heavy machines or wherever there is a risk of injury, because many times it is not the epilepsy seizure which can kill them, but it is the wrong place, wrong time, which can be fatal to them. So they must avoid all those things. Dr. Vengamma, I just wanted you to give one advice to the people, particularly young girl. I had one girl come yesterday, she's getting married in December. So what would be your advice to this young girl with epilepsy who are going to get married?
First and foremost, sir, like mm, we have to disclose to the partner that who is going to become the partner that I have an epilepsy. Because most of the time what we see in our society, they will not disclose to the other party. And subsequently they come to us that they have not told us, that's why we have a problem. I think if she's already employed, it's better that I have a problem like this, I'm taking drugs currently, I'm okay, I'm under regular follow. If that other person agrees and willing to help, then only we should get married. Otherwise, as long as she's single, I think more freedom, more this one will be there. That's what I tell all my patients with epilepsy. You try to tell them if they are willing, only you do it. Otherwise, as a single, nowadays society is so open up, you can definitely live your own rather than getting into problems. But you should be open to tell, agree. But majority of the time we have seen maybe 50% of the time, even if the boy agrees, his parents may not agree, we have seen. But I said, okay, whatever problem you have faced now itself, it's better rather than getting into this one, then not able to come out. You wait for the next opportunities. After third or fourth, somebody may come who is really willing, who is really encouraging, definitely come. But that sort of a thing, I always tell them, even if the parents will not disclose, you as a girl who have an educated this one, better to disclose to the party so that they will not have any problems later. I completely agree, and we have made it a policy. I always tell everyone here that you must tell the family that you have an epilepsy. If they have any issue, they want to ask any question, kindly bring them to us. I will be able to answer them, convince them. And I think that has worked because in last 4 years, we had about 25 young girls got married, and some of them, in fact, has now delivered the child and their healthy child. So the families are very, very happy. So thank you very much, Professor Rangama, to deal and come out with this very, very important topic. And I will again request you to be here on whenever you have time, tomorrow or day after. We'll send you the link. Sure. Tomorrow we have an important program with the medical officer. And then 18th, we have a program with Asha worker in Maharashtra, who will request you to join initially as president of Indian Epilepsy Association, start the program and your comments. And mind you, we have a camp on 19th at 98th camp at Pune, and on 20th Sunday we have 99th camp at Satara. So we have taken this as a part of full epilepsy week. But certainly in January, when we have 100th camp, I will request you to kindly come to Mumbai and grace the occasion. We'll officially send you the invitation. We'll Thank you, sir. It's my pleasure. It's my pleasure. Thank you. So we move forward. There are many people who have joined later on, but आगे चलते हैं और we'll request Yashoda to kindly, who is the founder of Samvedna Foundation. She has been doing exemplary work in epilepsy marriage. She runs the marriage bureau, and I think this has to go at all India level. Yashoda will certainly work this year to have a complete all India level of marriage bureau setup. And I will get somebody to sponsor if we are able to get some 20-25 people to get married. So I will take that responsibility. So we would hear from now Yashoda about epilepsy and marriage. Yashoda, please. Thank you so much, sir. Thank you so much, Dr. Nirmal Surya, for inviting me here. Are you able to hear me? Yes. Yeah. Okay. So, दोस्तों एक्चुअली एपिलेप्सी फाउंडेशन ने बताया, इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ हम सब इकट्ठा हुए हैं. 17 नवंबर नेशनल एपिलेप्सी डे है, तो हम सब इकट्ठा आए हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. जब मैं मेरे बचपन की याद करती हूँ, जब 30 साल पहले या 20 साल पहले, 25 साल पहले ऐसा कुछ एपिलेप्सी के बारे में कुछ माहौल है, कुछ सेलिब्रेशन है, ऐसा कभी नहीं था. और आज ऐसा है और हम इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है.
और नॉट ओनली इन वन सिटी बट इन मेनी प्लेसेस वी आर डूइंग दिस। ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, अभी हमने डॉक्टर वेंगम्मा जी ने हमें वुमेन एंड प्रेगनेंसी के बारे में कहा, एपिलेप्सी एंड प्रेगनेंसी के बारे में कहा। तो उसके रिलेटेड टॉपिक ही मेरा है, जो जैसे अभी डॉक्टर निर्मल सूर्या ने बताया कि मेरा टॉपिक है मैरिजेस एंड एपिलेप्सी। तो हमारे किसी के भी घर में जब हमारे बच्चे को या कौन से भी एज के हमारे बच्चे को एपिलेप्सी की शुरुआत होती है, मिर्गी के दौरे आने लगते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे, पेरेंट्स के मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं कि इसका कैसा होगा, इसकी शादी कैसी होगी, इसको जॉब कैसा मिलेगा, इसका आगे कैसा होगा। ये सब पेरेंट्स के बारे में मन में आता है। और सब पेरेंट्स वैसे पूछने लगते हैं कि ये क्या होगा, अभी डॉक्टर हम क्या करूं, मैं काउंसलर जैसा काम कर रही हूँ तो मेरे पास भी आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जब आता है तो मेरा कहना है कि आप काउंसलर के यहाँ जाके ये पूछ सकते हो, डॉक्टर के यहाँ जाके पूछ सकते हो, पर जरूर पूछो और जरूर ये बारे में डिस्कस करो। तो यस, पर्सन विथ एपिलेप्सी कैन गेट मैरिड। आई मीन जिसको एपिलेप्सी की हिस्ट्री है उसकी शादी हो सकती है, पर तभी भी उसके हमने कुछ क्राइटेरियाज रखे हैं। तो क्या क्राइटेरिया है? तो पहले ये हम पूछते हैं कि क्या आपके मिर्गी के दौरे कंट्रोल में है क्या। तो कई लोगों को कंट्रोल में का मीनिंग नहीं पता चलता, इसीलिए मैं हम पूछते हैं आपका लास्ट दौरा कब था, ये लैंग्वेज में हम पूछते हैं। तो यदि आपको बहुत दौरे अभी भी आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी इमीडिएटली आप शादी का मत सोचो, पहले ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो पहली स्टेप ट्रीटमेंट होनी चाहिए और आपके डॉक्टर के साथ भी डिस्कस करना चाहिए। तो जब मिर्गी के दौरे कंट्रोल में आने लगते हैं, जब थोड़ा इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, मैरिटल एज के गर्ल्स और बॉयज इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, खुद के पैरों पे खड़े होने लगते हैं, 24-25 साल के होते हैं, तब आप उनके मैरिज के बारे में सोच सकते हो। तो पहले हम कहते हैं कि काउंसलिंग लेने के लिए जाओ, मैरिटल काउंसलिंग जो रहता है तो वो लेना चाहिए। तो अभी आपको एपिलेप्सी फाउंडेशन में भी अवेलेबल है काउंसलर्स, अभी सब काउंसलर्स तो बहुत है, पुणे में है तो हमारे यहाँ आ सकते हो, हम तो ऑनलाइन भी काउंसलिंग देते हैं। तो काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो लड़का या लड़की का पर्सपेक्टिव क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है, उसके मन में विचार क्या है शादी के बारे में, और यदि उसको बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या एपिलेप्सी के बारे में, ये भी हम देखते हैं। और पहली स्टेप ये है कि उनके मन में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आत्मविश्वास आना चाहिए। आत्मविश्वास से हमने कहना चाहिए कि हाँ, मुझे एपिलेप्सी की बीमारी थी पर अभी ये कंट्रोल में है, अभी मैं खुद के पैरों पे खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल विद एपिलेप्सी ऑफ मैरिटल एज। और हम पेरेंट्स को या वो ब्राइड साइड ग्रूम्स को हमेशा बताते हैं, आप आपके एपिलेप्सी के बारे में कैसे बताते हो, इसके ऊपर सामने वाला कैसा रेसिप्रोकेट करता है ये डिपेंड है। यदि आपने बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बताया, हाँ मुझे एपिलेप्सी है, ऐसा मैं बेचारी, ऐसा कहा, तो सामने वाला भी वैसा ही लेता है। तो आपने कॉन्फिडेंस से कहना चाहिए कि हाँ, मुझे एपिलेप्सी की बीमारी थी, इसीलिए मुझे मेडिसिन चालू है, पर मैं नॉर्मल हूँ, अभी मैं ये करती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, एटसेट्रा। ऐसे हम यदि हम कॉन्फिडेंस से बताते हैं तो सामने वाला भी वैसे ही लेता है और सामने वालों को भी वो अच्छा लगता है। लोकांना कौतुक वाटतं की वाह, याला किती आत्मविश्वास आहे। आत्मविश्वास महत्वाचा आहे। हमारा आत्मविश्वास जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हम कैसे बताते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें रहती है, पर ये कौन से भी बुक में नहीं लिखा होता है, ये हम एक्सपीरियंस से ही बताते हैं हमेशा। हम एक चीज हमेशा देखते हैं कि कभी कभी पेरेंट्स हमारे यहाँ आते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची मैरिटल एज का है, पर हम ये देखते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें खुद को देखना है उसको, आपका बेटा या बेटी है, वीडियो कॉल रहेगा या खुद ला रहे हो, पर हमें खुद के आंखों से देखना है। ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कभी कभी हम खुद के आंखों से देखते हैं तो हमें इमीडिएटली पता चलता है कि वो स्लो लर्नर है, उसका आईक्यू बहुत कम है। तो ये चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनकी हम शादी नहीं ये कर सकते हैं, उनमें
वो एबिलिटी चाहिए, उनमें वो ये सब लोगों के साथ बात करना, कंपेनियनशिप, शादी क्या होती है, मैरिटल लाइफ क्या होता है, इसमें नॉर्मल ये चाहिए, वो सब समझना चाहिए वो लड़का या लड़की को। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम खुद देखते हैं, काउंसलिंग सेशन लेते हैं, और उसके बाद तो पेरेंट्स, वहाँ जो पेरेंट्स ये सुनते होंगे उनको हम ये बताएंगे कि यदि आपके बच्चों का बहुत कम आईक्यू है तो उसके शादी के बारे में आप मत सोचो, क्योंकि वो उसमें वो एबिलिटी चाहिए। पर आप निराश मत हो जाओ, आप उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हो, कुछ व्यवसाय सिखा सकते हो, कुछ आर्ट सिखा सकते हो। पर मैरिज के बारे में आप डॉक्टर के साथ पहले बात करो, आपके आपके जो न्यूरोलॉजिस्ट होंगे उनके साथ भी बात करो। और अब और भी एक चीज पेरेंट्स हमेशा पूछते हैं कि जो नॉर्मल ब्राइड्स एंड ग्रूम, नॉर्मल मैट्रिमोनियल मीट में यदि आपके बेटे का नाम रजिस्टर किया है और यदि उन्होंने पूछा कि आपके बेटी का ये क्या प्रॉब्लम है, तो ये कैसा बताना, ये भी आपके डॉक्टर के साथ बात करो। और वो पार्टी को आप ये भी बता सकते हो कि आप हमारे डॉक्टर को मिलो और उनके साथ डिस्कस करो, वो आपको बताएंगे कि हमारे बेटे का एपिलेप्सी कंट्रोल में है और वो नॉर्मल जीवन जी सकता है। तो दोस्तों, जैसे डॉक्टर निर्मल सूर्या ने बिगिनिंग में कहा कि हमारा पुणे में संवेदना फाउंडेशन एपिलेप्सी मैट्रिमोनियल मीट है, तो ये जब से हमने शुरू किया है तब से ऑल ओवर महाराष्ट्र से लोग यहाँ आते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम महाराष्ट्र पर अदर स्टेट से भी आते हैं। और दूसरे स्टेट से आते हैं उनके लोग, आजकल इंटरकास्ट भी मैरिज हुए हैं हमारे यहाँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक दूसरे को समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो नॉर्मल मैरिज में सब देखते रहते हैं पत्रिका वगैरह वगैरह। तो उससे भी एक दूसरे को समझना और फैमिलीज अच्छी होना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि कौन सी चीजों को महत्व देना चाहिए और कौन सी चीजों को महत्व नहीं देना चाहिए, ये पेरेंट्स ने अच्छी तरह से सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो हम ये एपिलेप्सी मैरिज ब्यूरो की एक्टिविटी पिछले 15-20 साल चला रहे हैं। और मैं हमेशा हमारा जो जब जब मीटिंग्स होते हैं मैरिज के बारे में, तो मैं 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है ऐसा हमेशा बताती हूँ। एक है एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस तो हमारे एपिलेप्सी के बारे में होता ही है कि एपिलेप्सी का हमें स्वीकार करना चाहिए, पर मैट्रिमोनियल मीट के बारे में खुद के एपिलेप्सी का तो स्वीकार करना ही चाहिए, पर हमारा जो कंपेनियन होने वाला कंपेनियन है उसको भी यदि एपिलेप्सी हिस्ट्री है और दूसरा कुछ प्रॉब्लम है, दूसरे कुछ प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, तो उसका भी स्वीकार करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस इतने हाई होते हैं कि यदि हमारे बेटी को एपिलेप्सी हिस्ट्री है तभी उसको ऐसा लड़का चाहिए, वैसा लड़का चाहिए, ऐसे बोलते रहते हैं पेरेंट्स। तो हम बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशंस में ये होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस चाहिए, दोनों पार्टी को एक्सेप्टेंस चाहिए और एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि हमारे यहाँ जो बहुत सारी शादियां हुए, 30 शादियां हुए, तो उसमें से एक कपल था जिनको दोनों का भी मिर्गी के दौरे कंट्रोल में थे। पर शादी के बाद एक दिन वो जो लड़का है उसको एक रात को एक दौरा आ गया, और वो फैमिली ने इमीडिएटली उसको एडमिट किया। तो वो सब ठीक होने के बाद वो दोनों जब हमें मिलने आए थे, तो वो लड़की ने कहा और वो लड़के ने भी कहा कि मैम हम एक दूसरे को समझ सके। वो लड़की ने कहा कि मैं पूरी तरह से समझ सकी कि उसको क्या हो रहा है और उसका कैसा केयर लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। और वो इंसिडेंस हो जाने के बाद वो दोनों ज्यादा नजदीक आ गए, वो दोनों ज्यादा नजदीक आ गए। और अभी उनको तो नॉर्मल बेटी भी है। और तो ऐसा होता है कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है ना, तो प्रॉब्लम्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। प्रॉब्लम्स हमें सिखाते हैं कि रियल लाइफ क्या होता है। ये जो प्रॉब्लम्स के सिवाय का नॉर्मल जो लाइफ हम बोलते हैं ना, वो सब ऊपरी ऊपरी रहता है। हर एक के फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, पर ये इम्पोर्टेंट होता है हम वो प्रॉब्लम के कौन सी नजर से देखते हैं। हमें पॉजिटिविटी से देखना चाहिए कि ठीक है, ये है तो है, अभी हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अभी हमने स्वीकार किया है और उसके साथ हमें जीना है।
तो यही चीज मैरिज के बारे में भी होनी चाहिए कि एक दूसरे का स्वीकार करना, एक दूसरे को प्रॉब्लम के समझ लेना और उसके साथ जीना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, वो है एडजस्टमेंट्स। तो आज के जमाने में एडजस्टमेंट्स तो करना ही पड़ता है, एपिलेप्सी है या नहीं है, एडजस्टमेंट तो होता ही है। पर लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं क्यों करूँ एडजस्टमेंट। तो हम बताते हैं कि एडजस्टमेंट के सिवा आपका भी, पेरेंट्स का भी नॉर्मल लाइफ नहीं है और किसी का भी नहीं है, एडजस्टमेंट तो करना ही चाहिए। तो हमारे लाइफ में एपिलेप्सी है तो हमें एपिलेप्सी के साथ एडजस्टमेंट्स करना है। ये सब चीजें हैं, ये हमें उसका ठीक तरह से अभ्यास करना चाहिए, काउंसलर के साथ बात करना चाहिए, डॉक्टर के साथ बात करना चाहिए। और लड़का लड़की माँ बाप सब जब शादी तय होने लगती है तो हम कहते हैं सब लोग जाके मिलके एक दूसरे को न्यूरोलॉजिस्ट के साथ बात करो और क्या केस थी, क्या बीमारी थी, ये सब समझ के ले लो और उसके बाद डिसीजन ले लो। तो ये डिसीजंस होते हैं, ये अच्छे डिसीजंस होते हैं। मैं और एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ एक शादी हुई तो वो जो लड़का, आई मीन आदमी, ही इज 45 years old and he got married with a 40 years old woman और दोनों का भी कंट्रोल्ड एपिलेप्सी है। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कंपेनियनशिप भी चाहिए हमें बाद में। यदि उम्र ज्यादा हो गई है पर एपिलेप्सी की हिस्ट्री है इसीलिए उनकी शादी नहीं जम रही थी, पर अभी ये उम्र में भी उनकी शादी जम गई है और वो इतने हैप्पी है, इतना हैप्पी कपल है। तो हम जब जब ये कपल्स देखते हैं ना, जब यंग कपल है या थोड़ा एज ज्यादा होगा वो कपल है, पर सबको देख के बहुत अच्छा लगता है कि एक दूसरे को समझ लेके अच्छी तरह से वो जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपके भी घर में कोई ऐसा हो कि मैरिटल हो या मैरिटल एज का लड़की या लड़का, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। एपिलेप्सी फाउंडेशन के पास भी हमारे सब डिटेल्स हैं। और एक्चुअली अभी जैसा डॉक्टर निर्मल सूर्या ने कहा कि उनके यहाँ भी शादियां जमती है, वो तो अच्छा ही है। और सबसे अभी जो डॉक्टर सूर्या ने बिगिनिंग में कहा कि ये हमें ऑल ओवर इंडिया के लेवल को लेना चाहिए, ये हमें भी बहुत 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 लगता है। हम वो बहुत जरूर करेंगे। तो आप सबकी भी साथ हमें चाहिए और वो मिलेगी, ये मुझे मालूम है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर निर्मल सूर्या फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और यदि किसी को का कुछ प्रश्न है वो बाद में या अभी कभी भी पूछ सकते हो और मेरा कांटेक्ट नंबर भी आप सबको जरूर दे सकते हो। So thank you, Yashoda. It was a wonderful work you have been doing, and I'm sure many more people will get married. And getting married is not important. Getting successful marriage is what is the more important. A healthy marriage and healthy children. Vengam, आपके लिए एक simple question है. What is the percentage of pregnancy having epilepsy when both parents are on epileptic treatment? If you have some statistics, you could share. Unmute yourself and If both parents have an epilepsy, if she also patient is having epilepsy, that depends upon the type of epilepsy, like the chances, like idiopathic generalized epilepsies, they may have more incidence. But per se epilepsy pregnancy, it all depends upon the what type of epilepsy and what drug she's on. And most of the time, like in a pregnancy and epilepsy, 1/3 may remain same, 1/3 may become better, 1/3 may become worse during pregnancy. But if both parents are there, the chances of they getting next children getting epilepsy is high if they have a idiopathic generalized epilepsies like JME or certain genetic epilepsy. Otherwise, as such, like unless they do the genetic studies, we will not be able to tell the correct statistics. But if there are partial seizure, if the parents have a post-traumatic epilepsy secondary to head injury, or if the parents have a stroke, epilepsy due to stroke, even if the both parents have an epilepsy, the children will not develop. It's only generalized genetic epilepsies or idiopathic epilepsies, it will transmit. That percentage is only 6 to 7%.
If their mother has got a juvenile myoclonic epilepsy, the child also may get it. But if mother had epilepsy following a head injury, following a stroke, the child will not develop that. Or if mother has got a seizure because of diabetes or something else, these people may not get it. Only those, I think it's a very minority, maximum it does not cross 6 to 10% of the people who can transmit if both parents are. It all depends upon what is the type of epilepsy, what is the cause of epilepsy in the parents to do that. But if epilepsy in individual during pregnancy, again, 1/3 may remain same, 1/3 may become better also because of progesterone effect. 1/3 may become worse because of drug levels alteration, recurrent vomitings and stress, lot of sleepless. Those things can aggravate. Doctor, I would like to add one thing in here that हम लोगों को बताते हैं कि यदि आपको ये नेक्स्ट जनरेशन में आएगा या नहीं इसके बारे में टेंशन है तो you can adopt a child if you have that tension or if you have that doubt in mind. डॉक्टर आपका म्यूट पे है. डॉक्टर वेंगम्मा ने एक बहुत अच्छी चीज बताई और आप लोगों को एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ. डॉक्टर वेंगम्मा ने बताया कि जेनेटिक एपिलेप्सी जो होती है या जिनकी जीन्स पार्शियली एक्सप्रेस हो और वो आपस में शादी करें तो उनके बच्चों को एपिलेप्सी होती है. फॉर्चुनेटली जेनेटिक एपिलेप्सी के इंसिडेंस है डॉक्टर वेंगम्मा ने बताया 5 से 6% है और आने वाले कई सालों में एक सुविधा और हम लोगों को मिलेगी जिस तरह से साइंस बढ़ती जा रही है. जो जेनेटिक एनालिसिस अभी हो रहे हैं तो वी आर एबल टू डायग्नोस जेनेटिक एपिलेप्सी और उनकी जेनेटिक काउंसलिंग हो जाती है कि हाँ ये बीमारी है जो जेनेटिक है और ये आपके बच्चों को आ सकती है. तो ये बहुत सारी चीजें जो है एडवांस हो रहा है और आई थिंक दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जेनेटिक एपिलेप्सी डिफरेंट है और नॉर्मल एपिलेप्सी जो पोस्ट स्ट्रोक है, पोस्ट इन्फेक्शन है या ट्रोमेटिक है वो अलग है. आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर मंगल काडिल को आमंत्रित करूंगा. शी इज कोऑर्डिनेटर, शी इज को फाउंडर ऑफ मेंटल हेल्थ एम्स इन नासिक. She is a neuropsychologist, well trained from US, and I'm fortunate that she's been working for the last 4 to 5 years with me. Dr. Mangal, आप cognitive disability and epilepsy जिसके ऊपर कई सालों से काम कर रही हैं, उसके बारे में जरा हमारे सभी जो यहाँ पर पर्सन विद एपिलेप्सी हैं और ये प्रोग्राम जो है YouTube पे भी लाइव है तो जो लोग यहाँ नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो लिंक शेयर कर दें अपने दूसरे लोगों को. अभी भी देख सकते हैं, बाद में भी देख पाएंगे. डॉक्टर मंगल. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निर्मल सूर्या. वेरी गुड आफ्टरनून सबको. और ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल एपिलेप्सी वीक ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है आपसे बात करने की. सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू एपिलेप्सी फाउंडेशन एंड स्पेशली डॉक्टर निर्मल सूर्या. आज जो मैं आपको बताऊंगी कि अभी अभी 2 स्पीकर्स ने जो बताया कि शादी के बारे में ये सब चल रहा था. इट्स फाइन कि शादी करें नहीं करें. मुझे जो लगता है कि इसमें कॉग्निशन मतलब रोज का जो व्यवहार करना है या फिर बिहेवियर उसके साथ साथ जो आता है इसमें काफी सारा जो काम है उसमें करना बहुत जरूरी होता है कि रोज हम एक दूसरे घर का काम कैसे करें या फिर बाहर का काम कैसे करें जिसमें हम उसे बोलते हैं कि एबिलिटी जो है ब्रेन की एबिलिटी जो बोलते हैं कि उसमें काफी सारी अफेक्ट होती है. अभी इसका जैसे रिसर्च था वो बहुत साल से मेरा चालू है. जैसे 2008-9 में जब मैं ये काम कर रही थी अलग अलग न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी के ग्रुप का मैं देख रही थी कि किसमें कॉग्निटिव डिसेबिलिटी किसमें ज्यादा है और इसमें वर्टिगो, माइग्रेन, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, पार्किंसन और अदर ब्रेन डिसीजेस जो रेयर भी होते हैं उसमें काफी सारा काम उस टाइम मैंने न्यूरोलॉजिस्ट के साथ किया था. और उसमें मुझे ये लगा कि एपिलेप्सी जो है उसमें सबसे ज्यादा जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी बोलते हैं कि रोज का व्यवहार करना या फिर कोई लर्निंग करना, स्पेशली ब्रेन का लर्निंग जिसको हम बोलते हैं,
ये ब्रेन लर्निंग अच्छा सा होना, लर्निंग मतलब एकेडमिक्स नहीं है, लर्निंग इज अबाउट एवरीथिंग, जो हम रोज का व्यवहार करते हैं वो लर्निंग है, वो ब्रेन का लर्निंग है, वो हमेशा मतलब हम जब तक हैं जिंदा तब तक वो लर्निंग चलता ही रहेगा। और एपिलेप्सी का जो ग्रुप है, मुझे ऐसा लगा कि इसमें सबसे ज्यादा लर्निंग का जो प्रॉब्लम है ब्रेन का, वो सबसे ज्यादा है और वो सीवियरिटी के साइड भी काफी है, जिसमें मॉडरेट टू सीवियर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एपिलेप्सी का, और वो भी लंबे समय तक, ये जिसको हम ड्यूरेशन बोलते हैं वो लंबे समय तक का है। उस टाइम मैंने काफी कोशिश की थी इंटरनेशनल रिसर्च ढूंढने की कि किसने ये देखा है क्या कि एपिलेप्सी में स्पेशली कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कितनी है। लेकिन उस टाइम बहुत मजे की बात है कि मुझे सिर्फ एक पेपर मिला मेरे रेफरेंस के लिए, 2008-10 की बात है ये, तो मैंने वो मेरे रेफरेंस में ले लिया। लेकिन जैसे एपिलेप्सी फाउंडेशन में काम हो रहा है, डॉक्टर नीमल सूर्या हैज टेकन अप दैट वेरी इफेक्टिवली, और उनके साथ मुझे इतना काम करने का मौका मिला। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू डॉक्टर नीमल सूर्या, क्योंकि क्या है, इनोवेशन हम करते हैं लेकिन ये रिसर्च का अगर हमें एप्लीकेशन बहुत इफेक्टिवली हमें मिला करने को, तो उसका उपयोग हमें भी होता है, वो रिसर्च आगे बढ़ने के लिए भी उपयोग होता है। ऐसे ही जैसे सर ने बताया कि एपिलेप्सी फाउंडेशन में 200 से ज्यादा लोगों को हमने ये इस्तेमाल हमने अभी तक किया है। उतना ही नहीं कि जैसे सर ने बताया कि हमारा वो नेशनल हेल्थ मिशन के साथ जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में जो काम होता है प्री एपिलेप्सी कैंप्स में, हम इंटीरियर में जाते हैं महाराष्ट्र के, और वहाँ पे भी काफी लोगों में ये अवेयरनेस रेजिंग हमें बहुत अच्छे से करने को मिला है। अब ये डिसेबिलिटी को हमें क्यों देखना चाहिए, क्योंकि स्पेशली एपिलेप्सी में होता ऐसा है कि सीजर एपिसोड एक बार भी हुआ जिंदगी में तो भी ये ब्रेन के लिए काफी इंफॉर्मेशन लॉस होता है, जिसको हम सेंसरी लॉस बोलते हैं। और ये किस टाइप का है, कितनी ग्रेविटी है, इसके ऊपर भी काफी रहता है। लेकिन साइंस के मुताबिक ऐसा है कि हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन जब ये तैयार होता है, जब हम माँ के पेट में होते हैं प्रेगनेंसी के पीरियड में, तो उसके बाद से हमारी जिंदगी के आखिरी वक्त तक ये चालू ही रहना चाहिए, इसको बंद नहीं होना है। और रही बात हार्ट की, अगर बंद हुआ तो अलग बात है, लेकिन सीजर में अगर हमें ऐसा लगा कि ब्रेन स्टॉप हुआ है, क्योंकि सीजर के टाइम ब्रेन का अलग जो सराउंडिंग है उससे उसका नाता टूट जाता है, दैट actually taking sensory information that is stopped for that while, because brain is more engaged into this epileptic activity. और ये एपिलेप्टिक एक्टिविटी जो है, जैसे कि हमारे एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट होता है, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उस रूम का सब चला जाएगा, उसके जो लाइट्स है पूरा इलेक्ट्रिकल जो फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो जाएगा। उसी हिसाब से ब्रेन का भी ऐसे ही होता है कि जब ये सीजर एक्टिविटी होती है उस टाइम दिस ऑल स्टॉप्स, द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज स्टॉप, क्योंकि ब्रेन इज मोर एंगेज्ड इनटू नॉर्मलाइजिंग दोज ओवर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और ये जब इलेक्ट्रिविटी उसको करनी है, कंट्रोल में लानी है, तो वो खुद तय करता है कि मैं अभी शट डाउन हो जाऊं। सो दिस इज द ओनली मशीन इन द एंटायर यूनिवर्स। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना फैसिनेटिंग है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, कि वो खुद तय करता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैं अभी ये बंद करने के लिए खुद को मैं शट डाउन कर दूं। काफी ये तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम होगी, और कम होगी इसका मतलब ऐसा है कि डैमेज ज्यादा नहीं होगा ब्रेन को। एंड दिस इज द ओनली मशीन इन द एंटायर यूनिवर्स कि जो खुद तय करता है कि जब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम होती है वो खुद को रीस्टार्ट करता है। सो दिस इज द ओनली मशीन इन द यूनिवर्स। इतना वो फैसिनेटिंग है कि वो खुद तय करता है अभी ये सीजर एक्टिविटी अभी कम हुए हैं तो मुझे अभी रीस्टार्ट करना है। लेकिन इस गड़बड़ में होता ऐसा है कि उसका एनवायरनमेंट का नाता टूट जाता है। सो दैट टाइम द इंफॉर्मेशन लॉस इज देयर,
और ये इंफॉर्मेशन लॉस से ऐसा होता है कि जब ब्रेन रीस्टार्ट होता है तो उसने पहले जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो चल रहा था, बीच में आई सीजर, उसके बाद फिर से रीस्टार्ट हो गया। सो देयर इज अ इंफॉर्मेशन गैप, और ये गैप में उसको ऐसा होता है कि वो रिलेट नहीं कर पाता, एंड दैट क्रिएट्स अ गैप इन इंफॉर्मेशन। और जब भी किसी भी वजह से सीजर्स आते हैं, जितने आते हैं, कितने टाइम आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, उस हर एक सीजर में इस ब्रेन का इंफॉर्मेशन लॉस होता जाता है। ज्यादा करके मैंने देखा है कि जो एज ग्रुप्स हैं वो छोटे में बहुत होते हैं, बिकॉज देर आर मल्टीपल, आई मीन द लिस्ट ऑफ रीजंस, कि प्रेगनेंसी का रीजन है, कुछ इन्फेक्शन है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, कुछ प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। ये काफी मैंने शेयर किए हैं, शेयर स्लाइड पे किए हैं, और हमने डॉक्टर निर्मल सूर्या के साथ बहुत सारे हमने पेपर्स भी पब्लिश किए हैं, और रीजंस बहुत है। और मैं एक बहुत पॉजिटिव बात आपको मैं बताती हूँ आज, कि यू कैन एक्चुअली प्रिवेंट एपिलेप्सी। अगर आप वो कुछ जो रीजंस है उसके आप अगर प्रिवेंट कर सकते हो, और प्रिवेंशन का बहुत बहुत बड़ा महत्व ऐसा है, पूरे जिंदगी भर का सवाल है। अगर प्रिवेंशन हो जाए, या फिर अच्छे से आप कंट्रोल के लिए वो सीजर्स को आप जल्दी कंट्रोल करना, मेडिसिन लेके, अच्छा सुझाव लेके मेडिसिन का आप उसको कंट्रोल कीजिए, आप उसको कम से कम कीजिए, ताकि ब्रेन का ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का जो एरिया है वो कम से कम रहे, और आगे चल के ये जो फंक्शंस हैं ब्रेन के वो अच्छे रहे। इसके लिए हमने एपिलेप्सी फाउंडेशन में बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काफी सारे जो बच्चे हैं, काफी सारे बच्चे ही हमारे पास आते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन मैं बोलूंगी कि राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल द एज ऑफ 42 48, ज्यादा से ज्यादा 49 का मैंने एक पेशेंट देखा है विद एपिलेप्सी। बट मोस्टली आई हैव सीन दैट कि बचपन से लेके 42 एज तक बहुत सारा एपिलेप्टिक एक्टिविटी देखी है। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, मेडिकल न्यूरोसाइंस में ऐसा बोलूंगी कि ये एक्टिविटी ज्यादा हमें इस एज तक क्यों दिखती है, बिकॉज द ब्रेन इज वेरी मच एंगेज्ड इन अंडरस्टैंडिंग द एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट का ज्यादा से ज्यादा वो नॉलेज में उससे इंटरेक्ट करे, ये जो एक्टिविटी ब्रेन की रहती है। क्योंकि ये प्रोडक्टिव एज में देखिए आप कि एकेडमिक एक्टिविटी है, ब्रेन का लर्निंग है, इट मे बी न्यूमेरिकल है, लैंग्वेज है, एनवायरमेंट से स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये सब लर्निंग एक्टिविटी ब्रेन की बहुत ज्यादा ये प्रोडक्टिव एज में रहती है। और उस टाइम इट्स ऑब्वियस दैट एनवायरमेंट का जो उसका इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए एपिलेप्टिक एक्टिविटी या सीजर एक्टिविटी जो हम देखते हैं वो इस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सर ने जैसे बोला कि ये ब्रेन नेक्स जो हमने डेवलप किया है उसमें दीज आर ऑल मैनुअल एक्सरसाइजेस, क्योंकि उसके पहले मैंने डिजिटल काफी किया था, एक्सप्लोर किया था, उसके काफी मैंने प्रेजेंट भी किए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा एक टाइम तक कि डिजिटल को बहुत सारा लिमिटेशन है, क्योंकि ब्रेन का जैसे मैंने बोला इट्स अ वेरी वेरी एक्सेप्शनल मशीन, और ये मशीन काम कैसे करता है कि किसी भी बड़े से बड़े, इवन मैं बोलूंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आया तो भी ये ब्रेन को कोई भी compete नहीं कर सकता। ये किस तरीके से सोचता है, ये करता है काम। तो इसके लिए ये मैनुअल एक्सरसाइजेस हमने डेवलप किए, और एपिलेप्सी फाउंडेशन में जब हमने ये काम किया ओनली फॉर एपिलेप्सी पॉपुलेशन, दिस वाज अ वेरी फैसिनेटिंग वर्क एंड वी स्टिल डूइंग इट वेरी एक्टिवली। तो इसमें हमने ये देखा कि छोटे जो बच्चे थे जो स्कूल में जा रहे थे, पहले तो स्पेशल स्कूल में थे, और जैसे जैसे हमने उनका कॉग्निटिव जो शुरू किया हमने काम उनका, उनको रिहेबिलिटेशन शुरू किया, तो उसमें मेमोरी भी आती है, न्यूमेरिकल, लैंग्वेज फंक्शनिंग सब आता है। और ब्रेननेक्स में हमने ऐसा किया है कि वी हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल। तो सिंप्लिसिटी ऐसी है उसकी कि जैसे हमारे जो केयर गिवर्स तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है,
फिर भी हमने क्या किया कि उनको हमने ट्रेनिंग दिया कि उनके बच्चे के लिए वो घर में जैसे हम उनको बोलते हैं उस तरीके से वो उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे दें, जो हमारे टूल्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं उस तरीके से। ये बहुत पेशेंट सेंटर्ड काम है, ये जनरलाइज नहीं है। और ये पेशेंट सेंटर्ड काम उसको टेस्टिंग करके, वो ब्रेन का टेस्टिंग करके उसको अप्रोप्रिएट टूल्स देके वो हमने शुरू किया। और वेरी फैसिनेटिंग एंड वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमको हमें उसमें मिले। और मैं बहुत आभारी हूँ सर की कि बहुत सारे बच्चों को हमने स्पेशल स्कूल से नॉर्मल स्कूल के तरफ से हम लेके आए और हमारे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं अभी नॉर्मल स्कूल में जाते हैं। और दूसरी बात ये भी मैं बोलूं कि स्पेशल स्कूल में भी जो अभी तक बच्चे हैं जो काफी सीवियर थे, कुछ स्पीच का प्रॉब्लम है या फिर अलग कुछ प्रॉब्लम है उनको, दे आर स्टिल इन स्पेशल स्कूल, लेकिन फिर भी वो स्पेशल चिल्ड्रन में सबसे टॉप है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो इसके बारे में एक बहुत सारा इंटरेस्टिंग बुक हम पब्लिश करने वाले हैं जिसमें ये सब जो केस स्टडीज है, कुछ केस स्टडीज हम डिटेल में उसमें मेंशन करेंगे। और बाकी सारे जो है क्योंकि केसेस बहुत सारे हैं तो उसमें ज्यादा करके हम देखेंगे कि रीजंस देंगे कि रीजंस को हम कितना प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये सीजर्स ना आए, और अगर आ भी गए तो फिर उसको कंट्रोल करेंगे और जल्दी से जल्दी उसको कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन देंगे ताकि जो मैडम बोल रहे थे कि मैरिज का जो आगे चल के उनको ये सब प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। और ये इट्स नॉट ओनली अबाउट मैरिज, क्योंकि एडोलेसेंट स्टेज में जाएंगे तो बहुत सारा बदलाव शरीर में आ जाएगा, तो ये सब फेस करना, और एडल्ट स्टेज में जाएंगे तो और भी उसमें एडिशन हो जाएगी। तो अगर एपिलेप्सी जल्दी उसका अगर डिसेबिलिटी का हम सोचेंगे, रिहैबिलिटेशन का जल्दी से जल्दी सोचेंगे तो ये बहुत अच्छा होता है। सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से कि उसमें टाइम का कोई फैक्टर नहीं, एज का, कि लोग पूछते हैं कि बाबा अभी 40 हो गया अभी होगा क्या, अरे जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। और दूसरी बहुत पॉजिटिव बात मैं आपको बताऊंगी कि इसमें टाइम नहीं लगता, कि 5-6 महीने में अगर आपने अच्छी तरीके से रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस फॉलो किया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये जो ब्रेन होता है वो अच्छी तरीके से कैपेसिटी भी हासिल कर लेता है। और इतना भी नहीं, बहुत जरूरी बात ब्रेन मिक्स की मैं आपको बताऊंगी कि ये सस्टेनेबल है, ये सस्टेन होता है। और कुछ सालों के लिए हम सिर्फ इसका बोलते हैं कि ये कंटिन्यू करो, जो एक्सरसाइज दी है उसको कंटिन्यू करो। लेकिन जरूरी बात आपको ये समझनी है कि इसमें बहुत अच्छी तरीके से कैपेसिटी ब्रेन की खुद की डेवलप होती है, कि ब्रेन आगे चल के हमारी उनको जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब्रेन जो भी कैपेसिटी उसकी डेवलप करके जो भी उसको लर्निंग करना है वो अपने अपने आप वो लर्निंग करते जाता है। सो दीज आर वेरी important things I wanted to share. And second, अभी कोविड में अभी कोविड के टाइम हमने ऑनलाइन भी ये मॉडल बहुत अच्छा किया, और वो भी अच्छी तरीके से विद सिमिलर एफिकेसी हमने ये किया है। उसका सर के साथ हमने प्रेजेंट भी किया है, पेपर भी पब्लिश हुआ है, और हम अभी ऑनलाइन ओपीडी लेते हैं एंड वी कैन सर्व मेनी मोर पीपल ऑनलाइन, वो भी बहुत अच्छा है। और इसमें अगर आई एम वेरी मच थैंकफुल अगेन टू सर कि ये बहुत बड़ा काम सर कर रहे हैं, और उसके जरिए मैंने काफी सारा उनके साथ काम करके लोगों को अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ दिया है, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू वेरी मच सर, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई एम हैप्पी टू आंसर। थैंक यू डॉक्टर मंगल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वी आइडेंटिफाई द cognitive disability with children particularly and others who have an epilepsy, और उनका आइडेंटिफाई करके अर्ली इंटरवेंशन जो किया जा सकता है। और बेस्ट पॉसिबल ये है कि फैमिली को अगर साथ में इन्वॉल्व किया जाए, और फैमिली अगर रेगुलर उनको थेरापी देती है, तो हमारे यहाँ कई सारे बच्चे हैं जो नाउ दे आर डूइंग वेल इन द स्कूल, दे आर नॉट हाइपर एक्टिव, दे आर डूइंग बेटर, उनकी ड्राइंग्स बेटर हुई है, तो और वो रेगुलर सेशन करते हैं हर फ्राइडे को। थैंक यू वेरी मच।
So we move Thank you. forward. अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, लेकिन we move forward to Dr. Mrinalini. Yes, sir. Palchekar. She's Yeah. a coordinator for the children group, and she's going to talk about ER4 therapy for epilepsy. This looks like something new therapy. I'm not aware. Let's No, hear sir. from her. No, it is, yeah, so it's me, Dr. Mrinalini Palchekar, as doctor has already, I'm audible. Am I audible clearly? Yeah. Yeah, so as Yes, doc, yeah, thanks, Dr. Nirmal Surya. You have always given Uttejan Epilepsy Group an opportunity, whom I represent. I am a consultant homeopath and a general physician, family general practitioner. मैंने काउंसलिंग, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल और काउंसलिंग और रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी कुछ कोर्सेज किए IPH के थ्रू. हमारा ग्रुप जो उत्तेजन एपिलेप्सी ग्रुप है, ये डॉक्टर आनंद नाडकर्णी, डॉक्टर शुभा दत्ते फाउंडर्स है. IPH ठाणे इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल है, यहाँ से हम काम करते हैं उनके नीचे से. तो ये मैं हूँ. मेरा आज टॉपिक है ER थेरेपी फॉर एपिलेप्सी. ये विषय पे मैं बात करने वाली हूँ, ये आप हम सभी से बहुत परिचित है. हम रोज ही यह करते हैं, लेकिन अगर कर नहीं रहे तो आज मैं याद दिला दूं ये कितना महत्वपूर्ण है. ER थेरेपी यह होना चाहिए था एक्चुअली ERT थेरेपी, ERT स्ट्रोक 4 थेरेपी. पता नहीं ये T क्यों मैं भूल गई. E एपिलेप्सी के लिए मिर्गी, R रेगुलर नियमित के लिए, T टाइमली वक्त से, और चार नुस्खे हैं जो हम एपिलेप्सी मिर्गी के जूझने वालों के लिए और उनके पालकों के लिए है. ये हमें याद रखने हैं ये नुस्खे क्यों हैं और ये कितने महत्वपूर्ण हैं. तो पहला नुस्खा है फर्स्ट RT इज रेगुलर टाइमली मेडिसिन, माने नियमित वक्त पे दवाइयां लेना कितना जरूरी है. दूसरा नुस्खा है रेगुलर टाइमली हेल्दी मील्स फूड, यानी नियमित समय पर संतुलित खाना या भोजन खाना कितना जरूरी है. तीसरा नुस्खा है रेगुलर टाइमली 8 आवर्स नाइट स्लीप, माने निर्धारित समय पर रात को समय कम से कम 8 घंटे सोना, नींद लेना भी कितना जरूरी है. और चौथा रेमेडी या नुस्खा जो है वो रेगुलर टाइमली एक्सरसाइज, निर्धारित समय पर हमें वर्जिश पसंद, जो हमें पसंद है, जैसे योगा है, वॉकिंग है, मेडिटेशन है, ये सब हमें कितना जरूरी है वो करना इत्यादि, और अलग अलग प्रकार के जो एक्सरसाइज वो सब कितना करना जरूरी है. अब मैंने इन 4 नुस्खों को विस्तारित रूप से मैं बताती हूँ आपको. पहला है रेगुलर टाइमली मेडिसिन. मुझे 2 दिन पहले, मैं कुछ एग्जांपल्स में कुछ उदाहरण देके आपसे बात करूंगी. मुझे 2 दिन पहले सर दर्द हुआ, मैंने दवाई लेना टाला. मैं फिर इतनी अस्वस्थ हो गई कि आखिर मुझे दवाई लेनी पड़ी, ये जरूरी पड़ी. मुझे थायराइड की भी नियमित रूप से तकलीफ होती है, सुबह उठ के 1 गोली मुझे लेनी पड़ती है. ये मुझे 7-8 सालों से ये तकलीफ है थायराइड की, दवाई लेना जरूरी. कुछ कारणवश मैं कंटाल गई थी ये दवाई लेना, मैंने बंद कर दी थी. परिणाम यह हुआ कि मुझे भुगताना पड़ा, भोगना रहा. मेरा वजन कम हो गया, मेरा पाचन क्रिया, मेरा डाइजेशन ठीक नहीं रहा, मुझे कमजोरी आ गई. दवाई ना लेने से मुझे बहुत तकलीफ हुई. अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऐसे लोग अगर अपनी दवाइयां नियमित रूप से ना ले तो उनको क्या हो जाए. तो हमें मिर्गी वालों को, वैसे ही मिर्गी जिनको है उनको गुस्सा आता है कि, और कंटाल भी जाते हैं कि सालों से हम दवाई ले रहे हैं, वो छोड़ देते हैं कभी कभी दवाइयां. मगर ये दवाइयां अगर छोड़ें तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, और वो भुगतना किससे पड़ेगा, ये बहुत जरूरी. अगर हम दवाइयां पैसे के अभाव से ले रहे हैं तो डॉक्टर निर्मल सूर्या का एपिलेप्सी फाउंडेशन है, यशोदा वखन का संवेदना फाउंडेशन है, जहाँ पे हमें दवाइयाँ कम दामों में मिलती है और इनसे हमें जुड़े रहना है और इससे हमें फायदा लेना है. कभी कभी पैसे के अभाव से लोग दवाइयाँ टाल देते हैं लेना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है. तो दवाइयाँ लेना, और हमारे डॉक्टर जो हमें कहते हैं वो दवाएं उस वक्त पे, उस टाइम पे, उसी समय, अपने आप से कोई दवाई बंद करनी नहीं है, कोई दवाई दूसरी लेनी है. जो दवाइयां उन्होंने लिख के दी है वही दवाइयां हमें लेनी है. कभी कभी हम करते हैं जेनेरिक दवाइयां भी सोचते हैं लेने की, मगर वैसे डॉक्टर जी से पूछें, हमारे न्यूरोलॉजिस्ट से, कि हम जेनेरिक दवाइयां ले सकते हैं क्या. अगर ले सकते हैं, डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट हमारे कहते हैं, तो ही हम जेनेरिक दवाइयां लें, नहीं तो जो दवाइयां हमें डॉक्टर जी ने लिख के दी हैं वही हमें चालू रखनी है. दूसरा नुस्खा है रेगुलर टाइमली हेल्दी फूड. आम लोग भी अगर टाइम पे वक्त खाना ना खाए, संतुलित आहार,
तो उन्हें पेट की तकलीफ, एसिडिटी, कमजोरी, कब्जा, बाउसार इत्यादि बीमारियां होती है। आज के दौरे में नौकरी कॉरपोरेट हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, खाना वक्त पे कर्मचारियों को खाने मिलना ठीक नहीं, कठिन हो जाता है, बड़ा ही कठिन होता है। अपना टाइम, काम का प्रेशर इतना होता है कि बहुत कठिन हो जाता है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। समय पे संतुलित आहार, बैलेंस डाइट न खाने वाले ऐसे समस्याओं को लेकर पेशेंट आते रहते हैं हमारे पास। हम मिर्गी एपिलेप्सी वालों को संतुलित आहार, नियमित आहार लेना बहुत जरूरी है। उससे हमारी तबीयत स्वस्थ रहती है। कभी कभी भोजन के अभाव से भी मिर्गी के दौरे आने का संभावना होती है। इंस्टेंट, फास्ट, चटपटा खाना इच्छा होना स्वाभाविक है, बिल्कुल। मुझे भी पानी पूरी, भेलपूरी खाना बहुत पसंद है, मगर या फिर पिज्जा है या बर्गर है या नूडल्स है, ये खाना पसंद है, मगर रोज के मायने में नहीं। कभी कभार खा लिया तो ठीक है, मगर ये खाते हुए ये इतने संतुलित नहीं होते। इसलिए हमें संतुलित आहार पे हमें अधिक ध्यान देना है। कभी कभी खाना न खाने से भी, जैसे मैंने कहा, मिर्गी आने के दौरे रहते हैं। तीसरा नुस्खा है, ये सब हम कर ही रहे हैं, मगर थोड़ा और ध्यान देना चाहते हैं। कभी कभी ये बार बार सोच के करके भी हमें कंटाला आता है, मगर जैसे यशोदा वाकणकर ने कहा कि हमें एक्सेप्ट करना है, हमें एडजस्ट करना है, स्वीकार करना है कि हमें कुछ चीजें अपने लिमिट में करने हैं, कुछ अपने सीमा के दायरे में रख के हमें ये चीजें करने हैं। तो वो हमें हमारे अच्छे के लिए अगर हमें करना है तो वो बहुत अच्छी बात है। तीसरा नुस्खा है रेगुलरली टाइमली 8 आवर्स नाइट स्लीप। अगले हफ्ते मेरे पास एक पेशेंट आया, बाहर से, गांव से, कुछ उसे काम था, जरूरी, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट था और बहुत अधिक टाइम भी लेने वाला था उसका काम। तो उसने मुझे, उससे वो 2-3 दिन रात को जरा ठीक ठाक से उसकी नींद ना हो पाई, तो उसकी वजह से उसे तकलीफ होने लगी। हम सबको ये पता है, बच्चों को कम से कम, छोटे बच्चे माने 12-13 साल के आसपास के बच्चों के, छोटे बच्चों से 8 या 9-10 घंटे हमें नींद लेनी आवश्यक है। बड़ों को कम से कम 6 से 7 घंटे नींद लेनी का आवश्यक। मगर मिर्गी वाले लोगों को, जिन्हें मिर्गी आती है, मिर्गी के दौरे आते हैं, उनको कम से कम 8 घंटे रात की नींद लेना बहुत 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 आवश्यक है। यह रात की नींद रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे की वजह से सबसे अच्छी होती है। इस टाइम पे जब हम नींद लेते हैं तो इस समय रात को हम सोते हैं और इस समय शरीर अपना आराम करता है, और जो भी तकलीफ दिन भर में हमें हुई है, या वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसे ठीक करने में अपना शरीर खुद काम करता है, उसे ठिकाने और ठीक करने में। तो ये मैंने अपनी बात, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने अपने दिए, कुछ मेरे पेशेंट्स किए, जानबूझ के, कि अपना अनुभव कुछ है जिससे हम सीखते रहते हैं। भूल चूक करते हैं, मगर उससे सीखना और उससे आगे बढ़ना जरूरी है। मैं अपनी बात कर रही थी नींद के अभाव से, नहीं, जो पेशेंट की बात कर रही थी। फिर उसे बीमारी हो गई, जैसे सर दर्द हुआ, चक्कर आई, पित्त हुआ, एसिडिटी हो गई, थकान उस पेशेंट को महसूस हुई जो काम के लिए ज्यादा सो नहीं पाया था, अच्छी नींद नहीं आई, फिर थका नहीं, फिर उसके बाद उसे दवाई देनी पड़ी, ये सब करना पड़ा। आम लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, रात के इंटरनेशनल ड्यूटीज करते हैं, मगर दिन में सोते हैं, फिर भी कभी कभी वो थकान महसूस करते ही हैं। क्योंकि मैंने अभी जो आपको बताया, रात के 12 बजे से 5 बजे की नींद, सुबह 5 या 6 बजे तक की नींद होती है, वो सबसे अच्छी और शांत और सुरक्षित नींद होती है। हम मिर्गी जिन्हें हैं, उनको रात के 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है। यह ना हम ले पाए तो हमारा ब्रेन मज्जा तंत्र इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस शुरू करता है, जो अभी डॉक्टर मंगला ने कहा कि हमारे उसमें ब्रेन फ्यूज हो जाता है, अंदर जो द्रव होते हैं उसमें असंतुलितता निर्माण हो जाती है। द्रवों की असंतुलितता से प्रभाव के कारण मिर्गी नियंत्रण में नहीं रह पाती। आप सोचे ऐसे क्यों हम करें? 8 घंटे शांत रात को अगर हम सो पाते हैं तो हमारी मिर्गी के दौरे दूर भागते हैं, और फायदा किसका है? हमारा ही है, क्योंकि हम अपनी मिर्गी को कंट्रोल में रखते हैं, जैसे यशोदा वाकणकर जी ने कहा था, और जैसे डॉक्टर वेनम्मा ने भी कहा था कि हम खुद जाने कि हमारी तकलीफ क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है, हमारे न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, हमारे काउंसलर्स के साथ हम बैठ के सोचे समझे हम किस दौरे से हैं, हमें क्या करना चाहिए। चौथा और आखिर जो हमारा नुस्खा और रेमेडी है, रेगुलर टाइमली एक्सरसाइज।
कुछ ना कुछ कारण के वजह मैं नियमित रूप से वॉकिंग करती थी, मगर कुछ कारण से मैं रुक गई क्योंकि मुझे कुछ और दूसरे काम में मेरा ध्यान बटाना था। हुआ क्या, मैं सुस्त रहने लगी, स्फूर्ति मेरी कम हो गई, मेरे बदन में हमेशा दर्द रहता था। अब ये सुबह 10 बजे मैं ज्यादा करके जाती थी क्योंकि मुझे उस टाइम विटामिन डी भी सूर्य के किरणों से मिलती थी। अब इसका परिणाम क्या हुआ, मेरा विटामिन डी भी कम हो गया। तो मैं योगा भी करती थी, प्राणायाम वगैरह सब करती थी, इससे मेरा चित्त शांत रहता था, चंचल मैं कम रहती थी, विचारों में अस्वस्थता नहीं थी और काम करने में मेरा ध्यान बराबर रहता था। अब अगर मैं एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, मेडिटेशन ये सब मैं नहीं करती तो इन सब तकलीफों से मुझे गुजरना पड़ता है जो मैंने अभी बताई आपको। सर दर्द होना, स्फूर्ति ना होना, बदन दर्द होना, थकान महसूस होना, काम में चित्त न लगना, ध्यान न देकर बराबर काम होना। तो मैं काम कार्यक्षील नहीं रही कोई भी। मैं कभी कभी मेरे उदाहरण दूं क्योंकि वो मेरे स्वानुभव है, मेरे अनुभव है, इसलिए मैंने मेरे उदाहरण दिए, कुछ पेशेंट्स के उदाहरण दिए। फिर वॉकिंग मैंने शुरू किया तो इस सब से मुझे आराम मिला। एक्सरसाइज से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, सुदृढ़ रहता है, सतेज रहता है, स्फूर्ति रहती है, काम करने की इच्छा हमेशा रहती है, हमेशा हम खुश और प्रेरित रहते हैं आगे और अच्छे काम करने के लिए। ऊपर वाले अब ये सब नुस्खे मैंने बताया जो हम रोज कर रहे हैं, मगर कभी कंटाल जाते हैं, कभी कंटाला आता है, ना करने की इच्छा होती है। मगर जैसे अभी डॉक्टर मंगला ने भी कहा कि ये सब हम चीजें प्रिवेंट कर सकते हैं, माने इसे हम काबू में रख सकते हैं अगर ये 4 नुस्खे हम कायदे से पाए। बहुत सहज और सुलभ है ये 4 नुस्खे। टाइम पे खाना, टाइम पे दवाई लेना, टाइम पे एक्सरसाइज करना और टाइम पे 8 घंटे रात को सोना, रेगुलर टाइमली सब करना है। ये है ERT4 थेरेपी ऑफ एपिलेप्सी जो हमें एपिलेप्सी से प्रिवेंट करेगी। और इसको करने के लिए हमें एक्सेप्ट करना है कि हमें एपिलेप्सी है, कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं जो डॉक्टर यशोदा वाखणकर ने कहा और मैडम वेनम्मा ने, डॉक्टर वेनम्मा ने जो कहा कि अपनी कंडीशन हमें जाननी, मेरी परिस्थिति हमें जाननी है और हमारे न्यूरोलॉजिस्ट और काउंसलर्स के साथ बैठ के ये हमें और सुलभ और आसान करना। ऊपर वाले सभी तरीके आसान और रोज व्यवहार के ही हैं, सिर्फ थोड़ा ध्यान और याद से हमें इसे करना है। हमें इन सब थेरेपी से अपना दोस्त बनाना है, क्योंकि ये अगर हम करें चारों चीजें तो ये दोस्त हो गए हमारे, क्योंकि ये हमें सुरक्षित रख रहे हैं, स्वस्थ रख रहे हैं और अपनी मिर्गी अपने से ही, अपनी मिर्गी आपसे खुद से ही खुश रहेगी, क्योंकि वो आएगी नहीं है आपको, क्योंकि आप ये सब तरीके जानबूझ के याद से ध्यान से कर रहे हैं। क्योंकि ये ऊपर वाले सब नुस्खे कायदे से करने से मिर्गी और जरूर कम हो जाएगी और मिर्गी भी हमारी दोस्त बन जाएगी। तो ये मेरा सिंपल सब था, शायद सभी को सब पता है इस बारे में। मैंने सिर्फ सोचा कि अलग तरीके से मैं इसे पेश करूं। और डॉक्टर निर्मल सूर्या, ये मुझे बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं आपके आभारी हूँ कि आप हमेशा लगभग 2010 या कब से 11 से हम जुड़े हैं एक साथ, आपके संस्था ने हमेशा हमें कुछ न कुछ प्रोग्राम में बुलाया है और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप जो भी सब सुन रहे हैं, प्लीज ये 4 नुस्खे आप कायदे से कीजिए, बड़ा अच्छा होगा। आपकी मिर्गी और आपके दवाइयाँ सब आपके दोस्त और आपको स्वस्थ और सुरक्षित। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मृणालिनी। मेरे को लगा कि कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आने वाली है, लेकिन आपने ब्रेन हेल्थ के 4 नुस्खे जो बताए, जो कि सिंपल है यत इतने डिफिकल्ट है कि हम चारों कर नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ पे 6, 7, 8 मरीज जो बैठे हैं, मैंने उनको सबको बताया, तो उनमें से कई तो वॉक नहीं करते हैं, कई लोग योगा करते हैं लेकिन टाइम पे सोते नहीं, कई लोगों का फोन रात को 12-1 बजे तक चालू रहता है, और 1-2 लोग हैं जो दवाई बराबर नहीं लेते, बीच बीच में गायब कर देते हैं। तो आपका ये जो ERP4 थेरेपी है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनमें सब में 1 या 2 डिफेक्ट तो है, वो आप इम्प्रूव करेंगे। सर मगर एक सवाल है। हाँ जी। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ ये आसान नहीं है, मगर है बहुत सुलभ, और अगर कायदे से पाले तो मिर्गी अपनी दोस्त हो जाएगी और दूर भागेगी अपने से। बिल्कुल।
मैं आपको बता दूं कि जो चीज सबसे सरल होती है वो वही चीज difficult। सबसे कठिन होती है. जी बिल्कुल जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। या आप Walking कुछ is कह रहे so थे? simple. Walking is so simple. यस Yet we people don't know. यस सर, सर आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपको बीच में रुका दिया, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, दो सवाल आए हुए हैं. एक तो डॉक्टर मंगल के लिए है. Are हाँ। there any specific brain exercise to improve sensory learning, Dr. Learning it. Sorry, doctor, I just missed your last Sensory word. learning. हाँ. Sensory learning is more about occupational therapy, but it also is partly by the neuropsychologists. Sensory learning. हाँ. सेंसरी लर्निंग जो है ये बहुत स्पेसिफिक ब्रेन लर्निंग है और इसमें ऐसा है कि इट स्टार्ट फ्रॉम फोकसिंग आईज, कि जिसको हम बोलते हैं ना, ये जब हमारे पास पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि इसको ये आई कांटेक्ट नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, फिर उनको जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना वो उनको समझता नहीं. तो यहाँ से अगर हमें शुरुआत करनी है, सो इट्स ऑल अबाउट न्यूरोसाइंस. इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, काफी साल से है, लेकिन ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो थोड़ा अलग है. और अगर हमें ब्रेन के लिए ये सब करना है तो हमें ब्रेन रिहैब को ही पकड़ना पड़ेगा, जो हमने सक्सेसफुली किया. मतलब सालों साल ऑक्यूपेशनल थेरेपी लोग कर रहे थे, लेकिन ये सब अचीव नहीं हो रहा था. तो जब ब्रेन को स्पेसिफिकली रिहैब दिया तो वहां से ब्रेन तो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग ये सब शुरू हुआ, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी को जाएंगे तो ये सब तो होना बहुत जरूरी है कि विजुअल फोकस होना चाहिए. अगर कोई इंस्ट्रक्शन आपको दे रहे हैं कि ये उठाओ, उधर रखो, ये करो, तो ये तो फॉलो होना चाहिए. जो इससे हमें देखा है कि होता है. और आगे चल के ये कौन से भी अदर थेरेपी जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, ये सबको ये पेशेंट्स बहुत अच्छा फॉलो करते हैं जिन्होंने ये ब्रेन रिहैबिलिटेशन पहले किया है. तो ये बहुत अच्छा उसका उपयोग. सर मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगी अगर परमिशन है. इतना मैं आपको बता दूं कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी इज अ पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी फॉर ऑटिज्म. एंड this is we have run the autistic clinic when I was neuro rehab head at Nair Hospital. We have especially developed the autistic clinic where the speech therapists and occupational therapists along with neuropsychologists would work on the patient for sensory integration therapy, which will include the sensory learning. Yeah, Mrinali, you want to say something? Yeah, as Mangala has said, these are technical aspects of exercises. जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले का exercise yoga, pranayam, some breathing exercise like Brahmari, Omkar chanting, that also helps to increase the vibrations in the brain and give positive effects towards the condition. ऐसे मुझे लगता है. Thanks. No, that is for the normal people, but people who have a deficiency in certain part of the brain function, you have to target them specifically. Yes, sir. I think this question is coming from either a physiotherapist or from somebody, so Yes. I can understand. Manish has asked one question, and Vengamma, if you could quickly can guide them. Can epilepsy result in sleepwalking episode, and is there any correlation between epilepsy and dissociation? I think there is. Vengamma can briefly explain it. Unmute Vengamma. Epilepsy and sleepwalking are both are different. Sleepwalking, otherwise called somnambulism, it is one of the paroxysmal disorder during sleep. Epilepsy is, again, it's related to the brain and the epilepsy. But epilepsy can sometimes result in sleepwalking, like if they have a seizures like focal awareness with a complex partial seizures, with the part of postictal confusion, they may walk around. That may be confused with the sleepwalking. But per se, just some people just walks around sleep, somnambulism or something, sometimes sleepwalking or a sleep talking, both are not like an epilepsy. They don't need anti-epileptic drug. Perfect. And dissociation and epilepsy. You're Unmute muted, your- ma'am.
sorry. Basically, like dissociation is got many names. It's basically like called psychogenic seizures or a non-epileptic seizure, basically to mention that this is not arising from the brain. But in the people with epilepsy, there are about 25% can have a seizures of this dissociative type, that is psychogenic epilepsy. That could be many things because of the long-standing epilepsy, depression, they have another psychosocial issues. They may develop dissociation, but in some patients, dissociation seizures come straight. They may not have a genuine seizures which are arising from the brain. That's why actually when you see like in a good center of a neurology or epilepsy center, people who come many times wrongly diagnosed, these dissociative seizures or a psychogenic seizures, wrongly diagnosed as a real epilepsy arising from the brain, and they put on multiple drugs and not controlled. At a time when we sit and talk to them, take detailed history, take a video EEG, we found out of 100 of this type of uncontrolled epilepsies, almost 15% of them are turned out to be psychogenic, doesn't need drugs. That's why the misdiagnosis of psychogenic epilepsy as real dissociative seizures as real epilepsy is almost quite common, 15%, unless you have a detailed history, clarification about the episodes, observing the attack and taking a video EEG, he may miss it. But sometimes what happened, the people who had seizures, if they had control with the drugs, then whatever all this time they have enjoyed certain of those privileges, now once they're in epilepsy, they have to go into the society, they have to handle. With that fear, again, they start developing dissociative seizures, basically to draw the attention from the family and other co-workers. That can happen. That's why you have to take the detailed history. Epilepsy can associate with long-standing epilepsies, can have a dissociated epilepsies, and dissociated epilepsies can be misdiagnosed as epilepsy. But only thing you should be very clear, which is a clear epilepsy, like genuine seizure arising from the brain, which is a dissociative seizure, which basically to adjust the dose. If it is increasing of genuine epilepsies, we have to go on, adjust the dose, increase the drugs. If it is not only these episodes, we should not, on the contrary, we should try to reduce and taper the drugs, and we start giving a good counseling. Not to tell them that no, it is only, it's nothing is there in your brain, nothing to do, you don't have to worry like that. But you have to explain what situations it can occur, let the patient to accept it, then we can definitely control it. Wonderful. There are certain question has come. I'm 44 years with epilepsy. Epilepsy affect menopause. Can seizure increase? What precaution to take? So basically the menopause and epilepsy, because as you know, hormone related. Dr. Vengamma. Yeah. Basically, like I was telling, in women with epilepsy, estrogen is supposed to be the epileptogenic, progesterone is supposed to be the anti-epileptic, that is, it is a protective, like a preventive, this one. Actually, once in the menopause, it goes, sometimes they may occur first time as a seizure, and because of this protective effect of progesterone might be gone, they may have an increased seizures also, that is cannot be ruled out. But at the same time, if the first time seizure is coming after the age of 44 or 45, you should check. It's always secondary to underlying cause, not like children or adolescents where you can get idiopathic epilepsies. And that age 45, 50, idiopathic epilepsies are rare. Most of the time it is this one we have to investigate. But if the person is already having epilepsy, menopause can sometimes definitely increase the seizure frequency because the protective effect of progesterone is gone. At the same time, most of the time menopause, you develop sleep disturbances, all those things. That's why they can increase. We should take care, like what previously Mrinalini told, you should have a proper diet, proper exercise, proper stress-free life. In that menopausal life, I think you can definitely prevent. Wonderful. I think that's very reasonable.
And about the stopping of the drug, as you all know that one should have to withdraw very slowly. So Vengama, can you give that how one should stop the drug? If they are polytherapy, then come to monotherapy. And then if it is monotherapy, how slowly one should? See, basically, I think it is to stop the drugs or stopping of the drugs. It is Stopping of the drug. Yeah. It is seen that after 7 years of treatment, gradual tapering doses and then treatment, is it okay or right? Okay, gradual tapering of the drugs is the ideal. Again, it depends upon the what is the duration of epilepsy before they starting epilepsy and how many years they were seizure free, and then what is the type of epilepsy it is there, or if there is an underlying cause is found. Based on that, you have to decide when to stop, how long, what is the duration to stop. Again, depend upon the what is the number of drugs, what is the type of drugs. Like olden days, we used to use lot of phenobarbital. Phenobarbital has to be gradually tapered. That means 15 milligrams every 2 months only you have to taper. And when like drugs like sodium valproate, which have got a short half-life, we can taper it once in 15 days to 20 days. And the newer drugs also, you can taper it within a period of 50% of 50 to 100 milligram per every 1 month, you can taper it. Like drugs which have a long half-life need to be tapered very slowly. Drugs which have short half-life can be tapered off little faster. When to taper is again depends, normally 3 to 5 years from the last attack. If it is suppose if the child or a person has got underlying structural region, mental retardation, if there is some cause, they may have to take lifelong. But other things 3 to 5 years from the last attack. Suppose for a woman, if it is a juvenile myoclonic epilepsy, maybe after 5 to 7 years with the treatment with the sodium valproate, we may stop, but the chances of their recurrence is very high. We always counsel them. If it is there, again, you have to restart. But generally, it is 3 to 5 years from the last attack. And because that time we have to explain to them what is their chances of recurrence. Some of the people, they say, we'll take the risk, we'll let us. Because if after 3 to 5 years, the chances of recurrence of seizure in next 6 months may be 10 to 20%. Some of the says, we'll take the risk, we'll stop the drugs. Some people says, no, we cannot take the risk, we would like to continue. That's why all that has to be individualized based on the candidate's profession, candidate's occupation, what type of a drug, what is the suppose if the person is getting only once in 6 months, 1 year, it's a very short duration, you can safely stop the drug and we can tell your chance is very less. But on the contrast, if the person is having 15 to 20 years, he's just seizure free 2 years, then we say your chances are high, you may have to take. And if there are polytherapy on drugs, use among the drugs which you feel has worked well, you keep that, all other drugs slowly, taper it one by one, don't stop all at a time because it has to be tapered slowly. Otherwise, there will be something called breakthrough or withdrawal seizures will become more. But this has to be individualized. The doctor who is following up based on your CT scan, if there is some findings are there, based on your EEG, based on your cognition, all that, the doctor individually will decide whether when to stop, how long to do it, and how to do it also. Absolutely. I think it is more of a tailor-made therapy for a particular person rather than just a standard therapy. A certain standard you follow, but ultimately it has to be individualized. So, Mangal, there's somebody wants to know what are the mental exercises and you want to join your camp, you can come to Satara if you are coming on Sunday. But I must tell you, Mr. Kulkarni, Mangal has developed the BrainMax tool, which has got 40 boxes. So it is just not that one exercise. These are different exercises for different set of the children, for different kind of the brain, for different part of the brain. So to learn that is not very simple, but I think if you are interested, you must join her and try. It can be certainly very, very interesting and exciting. I've got one full set here.
and it costs about 1 lakh plus for the full set. But we have it at our Epilepsy Foundation where we are treating our patient. A last question, Vengama, to you, that somebody has raised the question of catamenial epilepsy. So what one should do if you have a seizure during the period, and does you need to rest, not to do exercise, or just some intermittent therapy can be taken to prevent that sort of a seizure during the period? Again, hormone dependent. Yeah. Yeah, if always attacks are during the relation to the menstrual cycle, like they're all called catamenial epilepsies, it can occur 3 days before the period or during the period or 3 days after that. If most of the attacks are only those related, then you can do something called intermittent anti-epileptic drugs like clobazam, that is clobazam, you can start take. And if your periods are very regular, you can start the drug 5 days before the starting of a period, during the period, and after 5 days, and you can stop. But most of the time, pure catamenial epilepsies are very rare, but the chances of routine regular epilepsy and the chances of these seizures during menstrual cycle may be high. That's why most of the patients, we continue the regular anticonvulsants throughout the day. But if the seizure frequency is high during that period, we can add clobazam. Otherwise, suppose if a person with the juvenile myoclonic epilepsy or absence, you put on sodium valproate, some other drug. But in addition to those episodes, patient may get attacks more in frequency during the menstrual cycle. We can add intermittent therapy. Another thing is there are some, we tried of hormonal drugs like progesterone also has been tried during the pregnancy injection. But I think currently they are not in practice. But what my suggestion is, you can have, if you have a regular cycles and if you know that you are getting regularly during those periods, you can have an intermittent clobazam with the regular consisting anti-epileptic drugs already for this one, because isolated catamenial epilepsy is very, very rare. Thank you very much. We had a wonderful session, and I'm extremely happy that today we got nearly 18 to 20 questions and suggestions from the people are here. They have worked 60 online and 10 offline who has joined today's session. All of them are, I think, person with epilepsy. So, and very important thing is this session will be available on YouTube channel of Epilepsy Foundation. You can go there and you can forward it to your friends. We will close the session today, and we have another important session coming up tomorrow. Tomorrow we are having a session specifically for medical officer of Maharashtra, and we will be doing the session for the medical officers, which is for physician, dietitian, medical officer, guest worker from the Maharashtra, and that will be from 12:30 to 2. And then we have another session for people with epilepsy from 2 o'clock onward. Those who are all our Epilepsy Foundation members and others, they should join at 2 o'clock, where we have 2 or 3 good news to be celebrated. We have one of our own member been promoted, received the Golden Light Award. So we will be announcing that tomorrow after the IPE meeting. We also have a couple of others who would be around. So do join us tomorrow. There is one last question from Nanali. Does homeopathy work in epilepsy? Get back again, sir. Does homeopathy work in epilepsy? Yeah, it so happens, sir. Again, as Dr. Vengamma has always been mentioning, Dr. Bhuma Vengamma, the type of epilepsy and the causes are important. Directly, there are some medicines which can help epilepsy directly, but otherwise, at least the side effects of the medicines or the conditions, the
paramedical conditions like, nausea, upset stomachs, indigestion, all that can be helped with homeopathy. But directly, it takes some time to act. So in that process, the person who is with epilepsy should not suffer, because as Dr. Mangal has said, even a single stroke can affect the cognitive function of the brain. So homeopathy will take some time if it's been an acute or subacute or a chronic epileptic condition. So there have been senior doctors than me also who have been giving good results with epilepsy. But I feel that with that, if you take homeopathy side by side, maybe your dosages of allopathic medicines would go down to some extent. So at least if the side effects So of sleepiness. maybe in future we could do some trials, as Government of India is very much keen on Ayush. So we can just work on holistic therapy of Yes, sir. As an yoga, alternative therapy, we can all. homeopathy and, Yeah, because and, Ayurveda Unanani also so, would be having for some. those who think it is only Maharashtra, Dr. Vengamma is from Tirupati and she's running a center there. We Yes. have in Delhi, there is a center run by Eames guy. In Ludhiana, is run by Param. So there has been epilepsy, Indian Epilepsy Association working around. We have started the Epilepsy Foundation in Mumbai. So we are predominantly at the moment working in Maharashtra, but maybe if everything works out in the future, we will expand to all across the country with the Government of India supporting it. So we are working on that, how we can get Government of India to start Epilepsy Foundation model across the country. Once again, thank you very much for your encouragement. We are committed to serve the people with epilepsy and we will do our best. Dr. Vengamma is President of Indian Epilepsy Association. She has been working very hard for people with epilepsy, along with Dr. Gagandeep Singh, who also is Secretary of IEA, as well as now the President of Indian Academy of Neurology. So we are going to see a lot of new good things coming out during their tenure. Thank you, Professor Vengamma, Yashoda, Mangal, and Vinandi. And thank you all. Join us tomorrow again and have a nice day. Thank you. Thanks so much for the opportunity Thank you. always to be given. Thank you, sir. Good day. Thank you so much. Thank you so you. much. Thank Good day. you. Thank you. Thank you. Thank you.